हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गाइस, आज मैं आपसे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस की बात करने वाला हूँ, बट उससे पहले कुछ जनरल टॉक कर लेते हैं विच विल लीड अस टू आवर टॉपिक। वी हैव थ्री फंडामेंटल यूनिट्स और थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहली है लेंथ, टाइम, मास। लेंथ के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर्स, टाइम के लिए सेकेंड्स, मास इज इन kilograms. These are the standard units, we know that. Some derived quantities, some derived units are also used. For example, for length, inches, foot, millimeters, nanometers, kilometers, miles. Larger distances जैसे astronomical scale पे तो astronomers use astronomical unit, है ना, we have read about it. टाइम के लिए नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स. बिगर यूनिट्स are डे, मंथ, वीक, ईयर, लाइक दैट. मास के लिए डिराइव्ड यूनिट्स are milligram, microgram, ton, metric ton. So there are lots of units, बहुत ज़्यादा units हैं. But we will stick to our discussion to the units which are decimal system following units, जो decimal system follow करते हैं. Like length है तो 1 meter is equal to 100 centimeters. This is decimal system. For example, inches and feet. 12 inches is 1 feet. That is not decimal system. So it becomes very tedious to deal with such units. So for most part of our calculations, we will stick to the decimal system of units, right? Now, what I want to introduce to you is dimensions. What are dimensions? I'll tell you. Let's say I talk about a derived unit. Let's say first is speed. So when I put a unit in a square bracket, it is no longer a unit. It is the dimension of that unit. So here मैं speed की बात नहीं कर रहा, मैं speed के dimension की बात कर रहा हूँ. तो इसको कैसे express करेंगे? Length के लिए we'll use the symbol L. This is the unit, but the symbol used is L. Time will be T and mass will be capital M. So I will use these dimensional symbols to represent speed. How? Now we know speed is distance upon time, right? It is distance upon time. So speed will be distance L upon time T, right? Next I derive, let's say, volume. Yeah, volume. Volume is in meter cube, so it will be length dimension to the power 3. So this is the meaning of dimensions. It's basically कौन से यूनिट की क्या पावर है. यहाँ पे वॉल्यूम के डायमेंशंस हैं. This is not volume quantity, the dimensions of volume. It's L to the power 3. For length we use L. Then I can derive velocity, I can derive density. Density is mass per unit volume, right? So mass is M per unit volume. That means L to the power 3. A very useful unit we can derive dimensions of that. Acceleration. Acceleration के units होते हैं meters per second square. So meters means length ऊपर, L upon time squared. So these are the dimensions of a few units. Dimensions को express करने के लिए we use three fundamental quantities: length, mass and time. नोट कर लीजिए. Now, with the help of dimensions, we can do our measurements. We have already studied about measurements, but here we want to focus about measurements and the uncertainties involved in them. So, any measurement
without the knowledge of uncertainty, the knowledge of uncertainty involved in it is meaningless. Please read this line once more. So इस लाइन को दोबारा एक बार पढ़ते हैं. एनी मेजरमेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट, जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, इज मीनिंगलेस. मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो मेजरमेंट इन विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट सम अनसर्टेनिटी. सम पीपल कॉल इट एरर ऑल्सो. तो ऐसी कोई मेजरमेंट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए या नहीं कर सकती जिसमें कुछ लेवल ऑफ एरर या अनसर्टेनिटी की गुंजाइश ना हो. और आपको अगर उस अनसर्टेनिटी के बारे में पता भी नहीं है तो ऐसी मेजरमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं बनता. प्लीज नोट कर लीजिए इसे. राइट. नाउ आई टेल यू एक बहुत हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. जस्ट सी, you must have heard the name of Galileo Galilei. Galileo Galilei बहुत पॉपुलर इटालियन फिजिसिस्ट, फिलोसोफर, थिंकर, विजनरी, बहुत आगे की सोच रखते थे. Galileo Galilei once asked a question to himself. What was the question? Why mammals are huge, they are big, but not too big, but not too big. मतलब कि मैमल्स का साइज जितना भी होता है वो ठीक है. काफी बड़े मैमल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि एलिफेंट्स, टेरेस्ट्रियल मैमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, जिराफ्स, बट इनसे ज्यादा बड़े मैमल्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करते. सो ही मस्ट थिंक अबाउट दिस कि मैमल का जो साइज होता है या उसका जो मास होता है वो कौन पिक करता है, कौन उठा के चलता है. बोन्स ऑब्वियसली. अगर मैमल्स बहुत बड़े होंगे तो बोन्स क्रश हो जाएंगे. दिस मस्ट बी द फैक्ट. सो यहाँ पे हिज ऑब्वियस आंसर वाज दैट the bones of mammals will break if they were any bigger. अगर वो अपने साइज से और बड़े होते तो उनकी बोन्स ही ब्रेक हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी उनके खुद के वेट के नीचे. फेयर इनफ. ठीक है. अगर मैमल्स ज़्यादा हैवी होते तो सारा प्रेशर उनकी बोन्स पे आता तो ऑब्वियसली क्रश हो जाती, टूट सकती थी. बट क्या ये चीज़ इतनी थ्योरेटिकल वे में उन्होंने अपने आप से कही होगी? द आंसर इज नो. उन्होंने डेफिनेटली कुछ मैथमेटिकल एजम्पशंस या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की होंगी. सो आज मैं आपको उस इनसाइट में लेके चलता हूँ जो गैलीलियो ने अपने इस आंसर में रखी होंगी, जो उन्होंने बात भी की थी अपनी बुक्स के अंदर. सो मैमल की एक बहुत बड़ी बोन होती है फीमर बोन, जिसे आप थाई बोन भी कहते हैं. तो वी कैन एज्यूम कि मैमल्स का बहुत ज्यादा प्रेशर उनके पैरों पे, उनकी थाई बोन पे आता है. तो जस्ट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द साइज ऑफ द मैमल. लेट्स से दिस अ मैमल and this mammal has 4 legs, right? I am drawing only one leg. So the size of the mammal is this much. Size का मतलब होता है from one of the farthest ends to second of the farthest ends कितनी लेंथ है, कितनी उसकी हॉरिजॉन्टल फैलावट है. ठीक है. And let's say this is the femur bone of the mammal. It has 4 femurs.
femur bone, and the length and the thickness of the femur bone is, let's say, L, and the thickness is D. The total height of the mammal, this height, is capital L. Let's say total height of the mammal is capital L. Now, if we go into the structure of the femur bone, it will look like this. The femur bone of a mammal. It looks like this. Let's say the femur bone has a height L. Let it be like this. This is height L dash. I'll call this L. This is the length of the femur bone. It has a thickness. This is the thickness. Just see, thickness D, and area of cross section of the bone is, let's say, A. Good enough? एक मैमल, उसका साइज S है, उसकी पूरी हाइट L डैश, उसकी फीमर बोन की लेंथ को स्मॉल l बोले हैं, तो स्मॉल l कह देते हैं, L, उसकी थिकनेस D और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. इसे नोट कर लीजिए. Now, I want to make a few assumptions over here. Yeah, and my assumptions or my argument will be, just see, I will argue that जितना मैमल का साइज बड़ा होगा उसी अकॉर्डिंग उसकी फीमर बोन की लेंथ भी चेंज होनी चाहिए. या जितना मैमल का साइज ह्यूज होगा उसी अकॉर्डिंग उसकी फीमर बोन भी लंबी होनी चाहिए. सो आई कैन से द लेंथ ऑफ द फीमर बोन L is directly proportional to the size of the mammal, right? Now the next assumption will be the mass of the mammal. Let's say the mammal has mass m. How this mass will change? Just see, size is a dimension and mammal is 3D object, 3D organism, and 3D organisms के पास volume होता है. So I can say मास चेंज होने का मतलब है उस मैमल की वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी. दैट मींस द मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज क्यूब. व्हाई? बिकॉज साइज इज अ काइंड ऑफ लेंथ एंड लेंथ का क्यूब वॉल्यूम होता है. सो मैमल का जो मास होगा वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, तभी उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. जस्ट सी, मास अपॉन वॉल्यूम is a fixed ratio, we call it density. If we want density to remain uniform, that means जिस proportion में volume increase होगा उसी proportion में mass भी increase होगा. So mass will be directly proportional to size, which is a kind of length only, का cube means volume. So using these two arguments, I can say that mass will be directly proportional to length of the femur bone cubed. मतलब mass will be directly proportional to the L cube. These are my two arguments. I call this equation number 1 or argument number first. The second argument comes in the concept of pressure. Just see, I say pressure is directly proportional to weight of the mammal, right? Weight upon area of cross section of the femur bone. Yeah, weight and area, and weight can be denoted by mass, area can be denoted by, I can say, d square. I know it's that d was the thickness, it can be called the diameter of the femur bone if you know the diagram जो मैंने बनाई है. So pi d square by 4 होगा, but I am removing all the constants over here because it's a ratio. So I can say it will be mass upon d square. So now if I do not want the mammal to break his bones, then that will mean the pressure should remain constant. Pressure
should remain constant. This is a very important second argument. Pressure should remain constant if we want the mammal to not break his bones. That will only mean that both these things should be proportional to each other. Mass should be directly proportional to thickness of the femur bone squared. That will be my second argument. First argument and second argument. प्लीज नोट कर लीजिए इसे. Done. So, using these two arguments, mass is directly proportional to d square and it is directly proportional to length q. That means d square is directly proportional to L cubed. That will mean the thickness of the femur bone is directly proportional to length of the femur bone power 3 upon 2. I take the square root of both sides. Now this gives us an insight. Just have a look. Let's say the size of a mammal increases 100 times. Okay, just see. The size of a mammal increases 100 times. Now we know size is directly proportional to length of the femur bone. इसका ये मतलब है उस mammal की femur bone भी 100 times increase करेगी to support its size because they are directly proportional. That will mean that उसका जो femur bone का thickness है उसे कितने times increase करना चाहिए? Just see, 100 to the power 3.2. That will mean 100 की under root is 10, 10 to the power 3 is 1000 times. Means अगर किसी मैमल की लेंथ को, फीमर बोन की लेंथ को या साइज को सिर्फ 100 टाइम्स बड़ा करना है, तो उसकी फीमर बोन की थिकनेस को 1000 टाइम्स मोटा करना पड़ेगा. नाउ हियर इज एन अनबिलीवेबल फैक्ट. ऐसा पॉसिबल नहीं है बायोलॉजिकली. व्हाई? Now we all are made up of bones, but there are so many other things in our body जो हमें बनाती हैं. अगर कोई मैमल में लेंथ बहुत बढ़ाई जाए तो उससे ज़्यादा प्रपोर्शन से उसकी फीमर बोन की थिकनेस बढ़ेगी एंड ऑल यू विल गेट इज अ बोन और अ मैमल जिसकी जितनी लेंथ होगी उसी के कुछ प्रपोर्शन में उसकी थिकनेस होगी. मतलब एक गुब्बारा सा बन जाएगा. आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, वो सारा का सारा बोन्स का ही बना मिलेगा because it is all about the bone, the femur bone. Femur bone ही उस मैमल का बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करने लग पड़ेगी. And let's not talk about कि मैमल्स के पास 2 फीमर्स या 4 फीमर्स होती हैं. We are mammals, we are bipedal. Now majority mammals in the fauna are quadrupedal, मतलब वो 4 पैरों पे चलते हैं, तो 4 फीमर बोन्स हैं. So ये जो फीमर बोन्स हैं वही मैमल को ऑक्यूपाई करेंगी and that is simply not biologically possible. So we can say from this result, this was an example, but this is the end result, that mammals of such huge sizes are simply not possible. Now this doesn't apply to reptiles. You must be thinking कि dinosaurs बहुत बड़े size के होते थे, तो what about them? So let me tell you कि dinosaurs first of all were not mammals, तो उनका body structure reptiles वाला था, mammals से different होता है उनका structure. And दूसरी बात है जहाँ तक femur bone की बात है, तो मैमल्स के लिए फीमर बोन का रेशियो हम बात कर रहे हैं, नॉट फॉर डायनासोर्स. उनके लिए लॉजिक वर्क कर गया किसी तरह, तभी नेचर में हमें इतने बड़े डायनासोर्स देखने को मिले. नाउ दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यू टू गिव यू जस्ट सम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर हिस्टोरियंस हैव डन, सच अ रिमार्केबल वर्क दे हैव डन. And this all was done possible with the knowledge of dimensions. I have used the dimensions, the powers of dimensions into this concept. Now I will come to some experiment part and then the things will become more clear to you. आप इसको नोट कर लीजिए.
So let's move forward. Now I'm going to introduce in front of you the wonderful, wonderful world of dimensional analysis in physics. To start with this concept, I will take up an experiment and I will argue about some of its things. Okay, let's start with it. I will talk about that the time taken by an apple to fall through a height, it's proportional like as follows. See, I will say that height and time, they are related. Obviously, they are related in some manner or the other. आप खुद सोचिए, let's say I make an apple fall from 10 meters. Let's say it takes 2 seconds. Now, if I increase the height to 20 meters, it will not take 2 seconds. It should take somewhat more than 2 seconds. So that means not even 4 seconds. That's not the case, but we do not know yet. So let's think that both are directly proportional, and the time taken by the apple to fall through certain height is directly proportional to height to the power alpha. Because I do not know what is the relation, I cannot be very much sure that it is directly proportional to only first power of height, मतलब h की power 1 होनी चाहिए. I cannot even be sure कि h की power 2 होनी चाहिए. It can be anything जो नेचर में देखने को मिले. Next, some people can also argue, or I can argue, that time taken by the apple will also depend upon the mass of the apple. So I can say it is also proportional to mass but to the power beta, because I cannot be sure what relation is to that with mass. And the last thing which I can argue is it also depends upon, let's say, acceleration due to gravity, because gravity is making it fall, so it is proportional to gravity to the power gamma. Again see, I am arguing, मतलब ये मेरा मानना है या मैं कह रहा हूँ, assert कर रहा हूँ, that a time taken by an apple to fall from certain height is directly proportional to height to the power alpha, directly proportional to mass to the power beta, and directly proportional to g, gravity, acceleration due to gravity, power gamma. Now let's start. One thing is pretty much sure. On the left side of the equation or proportionality, I am having time. That must mean on the right side also I should have time, because हम same units को ही equate कर सकते हैं. That is one basic principle in physics. On left side we have time. So on right side of the relation we should also have time. And this principle in physics is called as principle of homogeneity of dimensions. Means on both sides of the relation the two dimensions must be same. I cannot have time in seconds on the left side, and on the right side I cannot have meters per second square or meters or kilograms or meters per second. No, it should be time on the right side also. So now we are going to start. I have to rub this. I hope you are with me on this. Now I write a relation again. Time
is directly proportional to height to the power alpha, let's say, mass of the apple to the power beta, and acceleration due to the gravity to the power gamma. Now on the left side, the dimensions are of time. So this is t to the power 1, directly proportional to L to the power alpha, mass is m to the power beta, and acceleration due to gravity is meters per second squared. That means it should be L to the power gamma divided by T to the power 2 gamma, because L upon T square होता है तो मैंने पावर्स को अलग अलग लिख दिया. Now applying the principle of homogeneity and equating the dimensions, these powers on both sides, there is no mass on the left side. That means mass power, the power of mass on the left side is 0, and there is no length on the left side, so its power is also 0. Equating the things, here mass is beta, it is 0 on the left side, so beta comes out to be 0. First thing. Now here length is alpha plus gamma and it is 0 again, so alpha plus gamma is equal to 0, right? Now what about time? Here the time power is minus 2 gamma because it is downstairs, नीचे बैठा हुआ है. So जब ऊपर आएगा the t power will become minus 2 gamma. So I will say minus 2 gamma is equal to time की power 1. So gamma is minus 1 upon 2. So we can calculate alpha. Alpha will be equal to minus of gamma, it will be 1 upon 2. So all I can say is time is directly proportional to height to the power alpha, that is 1 upon 2. Mass is over because its power is 0, and acceleration due to gravity power minus 1 upon 2. So I can say the time is equal to some constant c. I do not know. There must be some constant जो यहाँ पे put होना चाहिए under the root of h upon g, or I can say it is directly proportional to h upon g square root. See यहाँ पे dimension से हमने कितना बढ़िया result निकाल लिया. The time taken by an apple to fall depends upon the square root of height to the acceleration due to gravity ratio of that. Now I will prove this concept of mine with the help of, with the support of some experiment. How? We need this result, and all I can say is that अगर मैं दो एप्पल्स लेके उन्हें अलग अलग हाइट से फॉल कराऊं, लेट्स से I take first apple at a height h1, it's 3 meters plus minus, because any measurement without the involvement of knowledge of uncertainty is meaningless. So I take some error into this कि मैंने measurement लिया but I cannot be 100% sure, there can be some uncertainty. I take the value of uncertainty to be 3 millimeters. So this is the measurement and this is the uncertainty, which we call error also. And I take the second height of the apple as 1.5 meters plus minus uncertainty of 3 millimeters. Right? Now we have this relation of time directly proportional to square root of h ratio g. So that means if I calculate the two times, just see, if I calculate the time of both the apples falling, it will be proportional to the ratio of height 1 to height 2, because g and g will cancel out. दोनों heights की ratios के square root के बराबर होना चाहिए times का ratio. Now we do this experiment. Before that, let's calculate the ratio of h1 and h2.
हाउ डू वी कैलकुलेट द रेशियो? जो पार्ट मेजरमेंट फॉलो होता है उसकी रेशियो तो डायरेक्टली निकल आएगी 2.000 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। जस्ट सी कैसे अनसर्टेनिटी को रेशियो में लिया जाता है। दिस इज 3.003, add this 0.003 on this side and subtract this 0.003 from this side. Why uncertainties को ऐसे सॉल्व किया जाता है? जस्ट थिंक, आई हैव टू मेजरमेंट्स एंड दोनों मेजरमेंट्स में वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि पहली मेजरमेंट में मैं अपनी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी लेके आऊँ, मतलब मैक्सिमम एरर आए, और दूसरी मेजरमेंट में भी मैक्सिमम एरर आए, मतलब उनके बीच में गैप मैक्सिमम हो जाए, तभी हम वर्स्ट केस सिनेरियो ले सकते हैं। इन दोनों मेजरमेंट्स में, इन दी रेशियो में मैक्सिमम गैप कितना आ सकता है? मैक्सिमम गैप तब आएगा अगर बड़ी वैल्यू और बड़ी हो और छोटी वैल्यू और छोटी हो, तभी आएगा। सो जब आप इसमें 3 ऐड कर दोगे इट विल बिकम 3.003 एंड इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे इट विल बिकम 1.497। When we divide those two values, we get 2.006. Subtract from this 2 value and you get uncertainty of 0.006. It's only a number because ratio height will give you a number only. So this is my uncertainty, right? Now there was an experiment जिसमें हमने दोनों एप्पल्स के फॉलिंग टाइम को मेजर किया एंड हमें बार बार मेजरमेंट्स लेने पे ये पता लगा कि एप्पल की जो फॉल हो रही है उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है एंड वो अनसर्टेनिटी आई 2 मिली सेकेंड्स की। सो वट एवर बी द नंबर ऑफ दिस टाइम अनसर्टेनिटी वॉज नोन टू अस 2 मिली सेकेंड्स इन बोथ द केसेस, 2 milliseconds. Now we did the experiment. पहले एप्पल को हमने 3 मीटर्स की हाइट से फॉल कराया और टाइम नोट किया एंड द टाइम केम आउट टू बी 781 milliseconds. So I will write it as 0.781. एंड सेकेंड एप्पल को हमने 1.5 मीटर्स की हाइट से फॉल करवाया एंड उसका टाइम आया 0.551 seconds, means 551 milliseconds. अब हमने इन दोनों वैल्यूज की रेशियो लेनी है। सो हाउ आई विल टेक द रेशियो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द डिवीजन ऑफ दीज टू एंड दिस डिवीजन केम आउट टू बी 1.417, this division, and now I have to take the uncertainty. So the same method, add 0.002 in this value and subtract 0.002 from this value and then divide. And when we divided, the value came out to be 1.425. Yeah, 1.425. हमने इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दी एंड 8 मिली सेकेंड्स का अनसर्टेनिटी आया। द रेशियो इज ओनली अ नंबर, 8 यूनिट्स का अनसर्टेनिटी आया। नाउ जस्ट सी, या सो ये अनसर्टेनिटी आया। नाउ व्हाट वाज दिस? दिस वाज द, फ्रॉम दिस आई टुक prediction. Prediction should be ratio of h1 upon h2. So इसका ratio हम लेते हैं and it comes out to be 1.414 plus minus 0.002. This ratio comes out to be this much, and we know that this ratio is directly proportional to the ratio of time intervals, and that was this much. This was my prediction जो मैंने mathematical calculations किया. This is my observation, and just see, अभी पता लग जाएगा कि the physics is correct or not. This value says the ratio should be 1.417 with uncertainty of 8 units, means 1.417 से 8 यूनिट्स तक ज़्यादा या 8 यूनिट्स तक कम वैल्यू आ सकती है, and this says the answer should be 1.414
with the uncertainty of 2 units, means minimum value हो तो 1.412 हो सकती है and maximum value हो तो 1.416 हो सकती है. So we can clearly see कि ये values और ये values overlap करेंगी, means इसमें जब 8 units का हम uncertainty ले सकते हैं, so definitely 1.417 and 414 में सिर्फ 3 units की difference है and 3 is definitely less than 8. That means physics work हमारी prediction, हमारी observation से match कर रही है. This is the beauty of dimensional analysis. Obviously, this lecture was only an introduction of this concept. We will definitely go further into this. But I wanted to show to you कि कैसे dimensions और dimensional analysis हमारे लिए कई natural phenomena समझना आसान बना देते हैं. But there comes some drawbacks also of this approach. What are they? One most prominent drawback is that in dimensional analysis we cannot predict or we cannot get constant value. Means whatever constants must be there in the formula वो डायमेंशनल एनालिसिस में कवर नहीं होते. Why? Simply because they do not have any dimensions. No trigonometric ratios are covered in dimensional analysis because they lack dimensions. So dimensional analysis की ये ड्रॉबैक बन जाता है, एक लिमिटेशन है कि इनमें कॉन्स्टेंट्स को, जो फॉर्मूला में आप कॉन्स्टेंट्स देखते हैं, आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. आप कौन कौन सी डायमेंशंस पे वो फॉर्मूला डिपेंड करता है, उनकी क्या पावर है, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट कॉन्स्टेंट्स को नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को नहीं कर सकते. बट वी विल कम टू नो कि हम और कौन से मेथड्स लगाएं जिससे कि ये अप्रोच कॉन्स्टेंट्स वाली भी अनवेल हो जाए हमारे सामने. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.